Hello students, welcome to Meetu Maths classes. Your question is, find the interval in which the function defined as modulus of x minus 1 upon x square is increasing or decreasing. तो आपको फाइंड आउट करना है ये इस फंक्शन के वो इंटरवल्स जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग. So first of all, because the function is defined as a modulus function, so let us define your function first. So fx can be defined as, क्योंकि आपका फंक्शन ब्रेक x is equals to 1 पे रहा है, so when x is less than 1, obviously x is not equals to 0, क्योंकि x is equals to 0 is not coming in the domain of the function. So x is not equals to 0. Your function is defined as negative because less than 1 के ऊपर आपका फंक्शन नेगेटिव डिफाइंड होगा. सो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. एंड व्हेन x is greater than equals to 1, your function is defined as positive function. Now let us consider your first interval when x is less than 1 and x is not equals to 0. Now in this interval you have to see the intervals in which your function is increasing and decreasing, and for that you have to take your fx is in this interval is 1 minus x upon x square. Now take first derivative. When your derivative is 1 upon x square minus 1 upon x. So derivative is minus 2 upon x cube minus plus 1 upon x square, or this can be written as x cube x minus 2. You can write this derivative function as x से आप multiply divide कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि now x raised to power 4 is always positive, तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर का साइन देखना है. जहां पर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा वहां पर आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा. सो योर फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग व्हेन योर डेरिवेटिव फंक्शन इज ग्रेटर देन 0. नाउ दिस फंक्शन विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन दैट एम्प्लाइज व्हेन x into x minus 2 will be greater than 0. अब ये जो फंक्शन है ये आपका एक पैराबोलिक फंक्शन है जिसके रूट्स 0 और 2 हैं. तो आपका पॉजिटिव ये फंक्शन कहाँ रहता है? व्हेन x इज लेस देन 0 और व्हेन x इज ग्रेटर देन 2. नाउ इफ यू कंबाइन दिस इंटरवल विद x लेस देन 1, सो ये तो आपका आ गया कि जहां पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड योर fx इज डिक्रीजिंग. डिक्रीज कहां कर रहा है? व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 0 and 2. नाउ let us combine this with x less than 1. तो x less than 1 आपका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है 0 से 2 के बीच में. 0 से लेफ्ट साइड पे योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, 2 के बाद भी योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एंड बिटवीन 0 to 2 योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग. इफ यू आर कंबाइनिंग विद योर इंटरवल x इज लेस देन 1, जब आप इससे कंबाइन करेंगे तो योर आंसर विल बिकम minus infinity to 0. Your fx is increasing in minus infinity to 0 and decreasing in 0 to 1. Decreasing in 0 to 1. Let us take this as your first statement. Now consider this interval. Consider the interval when x is greater than equals to 1.
तो इस इंटरवल में भी आपको देखना है कि आपका एफ एक्स कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है. योर फंक्शन इज डिफाइंड एज x minus 1 upon x square, or you can write it as 1 upon x minus 1 upon x square. Now the derivative function is minus 1 upon x square plus 2 upon x cube, or it can be written as x cube 2 minus x. Now when x is greater than, you have to check where your function is positive, derivative function is positive, and where it is negative. Now fx आपका जो ये डेरिवेटिव फंक्शन है वो पॉजिटिव कब होगा? when since x is greater than equals to 1, so x is always positive, so x cube will be always positive, so your derivative function will be positive when 2 minus x will be positive. That implies when x is less than 2, तो x less than 2 पे ही आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, so your function is increasing, and derivative is negative. So fx is increasing when your x is less than 2 and decreasing when x is greater than 2. बट अगर आप इस सॉल्यूशन को कंबाइन करते हैं अपने डोमेन के साथ, x is greater than equals to 1, अब आपकी सिचुएशन क्या है? 2 से लेस your function is increasing, और 2 के बाद your function is decreasing function. When you are combining this solution with your domain is when x is greater than equals to 1. तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ से कि 1 से 2 के बीच में your function is increasing. fx is finally increasing when x belongs to 1 to 2 and decreasing when x belongs to 2 to infinity. Now take this one as 2. Now combining 1 and 2, combining 1 and 2, we get that your fx is strictly increasing when आपका strictly increasing minus infinity to 0 union 1 to 2, and fx is strictly decreasing when decreasing function कहाँ है? when your x lies between 0 to 1 union 2 to infinity. So these are the intervals in which your function is strictly increasing and strictly decreasing function.